Yes, sir. Okay. So last time the storytelling was going on, right? I was telling you some story about the Rosalind Franklin, and anyways, we had to move on to the third unit, which has got chromosomes, and so you all know very well. You all must have studied the cell organelles, but there will be a little difference in graduation that you would be going a bit deeper into the know-how of those organelles. So, anyways, I have to start with the third unit. I have uploaded two videos. It's a very simple animated videos which would tell about the different cell organelles, and a small video about the chromosomes and the types and structures of chromosomes, structure of chromosomes. Well, so as we had already seen uh, a video to a clip from the biovision section of Harvard Medical School. From there also we had, I think you all have now the idea of how the cell membrane looks like, and why. Can anybody tell me why a plasma membrane is called unit membrane? I think we have already discussed it. I don't know. Do you all remember it or not? Why it is called unit membrane? Why a cell membrane is called unit membrane? Any idea? Can you all hear me? Yes, sir. Okay. Then when you don't have when you don't have anything to say, then at least tell us we don't know it. Then I can proceed instead of waiting for your responses. I can go on like. Anyways, so a cell membrane is called unit membrane because wherever you in the living system, wherever you find a membrane which is encompassing something like any cell. Every cell has a plasma membrane in an animal cell. If it is an animal cell, it has a membrane. It will not have a cell wall as plant cells have. Plant cells have cell wall, which gives its vegetative shape and size. But in animal cells, we have cytoskeleton, what we had seen in earlier discussions in earlier classes. So the membrane, wherever you will find a membrane, see in the video. In that we had shown it's a bilipid layer, and the hydrophobic and the hydrophilic ends are there. So the hydrophobic ends get towards each other, and the hydrophilic ends of those lipid molecules are towards the outer side, either the cell's outer side or the cell's inner side. So that way, earlier, I think we had a little discussion on that also. Like it was earlier thought of single membrane, then people have thought, no, 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 it's of three membranes because the microscopy has evolved and we could see three lines, two dark lines and one lighter line in between. The dark lines are because of the hydrophilic ends, and the lighter line is because of the hydrophobic ends being together towards the same phase. So that way, a brief period of three-layer, tri-layer plasma membrane culture was also evolved, but it was rejected very soon because when the microscope grew more evolved, then we could see this is now the third line because line or like a demarcation. So it's not a third line, a third layer. It's the two layers of lipids and intermittently placed by protein molecules. Some are only towards the outer surface, some are only towards the inner surface, and some are the proteins which are through and through
they pass on, the molecules set up themselves between the lipid layers through and through. That means they little bit of little portion of the protein molecule is exposed to outer surface, and some portion of it is exposed to inner milieu too. So when the proteins are attached on the outer surface, they are called extrinsic proteins, and they're in the inside surface, and they only interact with the internal environment of the milieu. We call them as intrinsic proteins. And the proteins which are through the membrane, we call them membranous proteins. Anyways, we won't be going into the details of this. Of course, in your PG course, when you study about the cell and cell membrane and cell organelles, you would go into the details of these molecules which are intrinsic or extrinsic or the membranous proteins. Anyways, so that way we knew what a cell membrane is, what is its composition. Then we had gone inside the cell, and we had seen there is a central organelle, central organ, or central structure, which is usually linked with the membranous structure, membranous continuity. That means, and those membranes, those structures are interlinked, and there are two pairs of organelles, which are called centrosomes or centrioles, which have got a pair of centrioles. These centrioles are responsible for creating these, those structures, micro as well fibers are at the time of division, and rest of the time the microtubules are formed, and that way it provides the shape and size, shape and rigidity to the cell by by encompassing a cytoskeleton. Right. So the nucleus is there are two organelles in the cell, in every cell in an eukaryotic cell, because whenever we talk of the animal cells or the cells of animals, usually they are eukaryotic. That means they have a nucleus. That means the nucleic material is being organized, and there is a membranous structure which is called nucleus. And this nucleus is double layered, and it has got pores, and pores have got a pore complex. Then a different set of molecules of protein molecules are there around the pore, which regulates the inflow and outflow of the molecules whenever they are required. But they are very specific, not like the other membranes, which are even the membrane is semi-permeable or selectively permeable structure, which allows only few things to get in and few things to get out of the internal milieu, internal environment. But external things can be engulfed also. They have got a different process, which is called phagocytosis or pinocytosis. Phagocytosis is a solid intake, and pinocytosis is liquid intake. Well, in the nucleus, we had talked about a little. We have gone into not the details. We have superficially touched it. That the nucleus has got again as the cytoplasm is there, the same fluidy substance is also there in the nucleus. That's called the nucleic matrix, or you can say it's nuclear plasm, which usually contains some material. What material is that? The material is nucleic acids, which are usually being, we have in last class we had seen how the Rosalind Franklin and others have, they were working on these material, the nucleic acids, which is being called as the chromatin of the nucleus. And that chromatin, the one which is darkly stained, we used to call that as heterochromatin, and the lightly stained one is called as the euchromatin. This is just because the way they are being observed under the microscope with the different stains. So on the basis of the staining capacity, they have been termed ability or the property, they have been termed as heterochromatin and euchromatin. The chromatin is nothing but the internal content of the nucleus, which is usually, now we know it, it is usually containing the DNA molecule. And when a cell gets into, when a cell enters into the M phase of the cell cycle, that is
division phase. As soon as the division phase starts, before the division phase, we have got the S phase, which is the synthesis phase, where the DNA duplicates, and the whole DNA of that particular cell inside the nucleus gets duplicated, and it becomes condensed. I think we have seen that clip also, where the histone proteins, the major proteins which help them to condense themselves, because this is a long thread-like structure. uh, but not the thread-like, because when people have observed under the division conditions of the cell, they have seen the thread-like structures in the cell, and they have termed them as chromosomes, because they used to get a color. They used to uh, receive colors. They used to uh, retain colors when they have been stained. So these chromosomes were further earlier, when this was not known that these nucleic acids are DNA and RNA. So what they used to call them as the chromosomes, as the basic unit of genetics. This is the basic unit which has been carried to next generation, because the same number of chromosomes have been observed in the daughter cell too when it gets into the division state. So that way, they used to think that this is something which earlier they used to call as factor of in heredity or inheritance. So these factors were like identified as chromosomes in earlier stages, and a lot of the studies have been undertaken by many workers around the world to understand the structure and the function of the chromosome. So it took a long time. There was a long period in which the basic content of the chromosome was not known. The molecule, the structure of that molecule was not known for a quite long time. So in that period, the much of the studies have been conducted on the shapes, structure, function, and types of chromosomes. And that way, it's been seen. I always tell, when a chromosome is represented, it is represented as X, but this is a wrong representation of X. I tell you, this is a wrong representation of chromosome. X is of course, it is representing chromosome, but not a single chromosome. Sorry. When a chromosome duplicates itself, it becomes two, but it's still attached with the centromere, the point where it is, there's a darkly stained structure in. That means a chromosome is like a single stick, which has got some point or some place where we can distinguish it into two arms, so that the point from arms are distinguished. That point is called centromere, and those arms are called chromatid. Not the chromatin, it's called chromatids. Okay, so a chromosome is always represented as a single stick-like structure which has got a centromere to which two arms are attached, and the longer arm is called the Q arm and the shorter arm is called the P arm. Usually the upper one we represent as P, and the below one we represent as Q, but it is not. If the chromosome is upside down, the arms would become different. So it's called the Q arm is the longer arm and the P arm is the shorter arm, depending upon the shape of the chromosome where the centromere is placed. The centromere, it will be, in some types it has been observed that it is exactly in the center of the chromosome. Why the chromosome? Of course, the chromosome is always represented as X, but that is not a single chromosome, it is a duplicated one. And usually chromosome is observed under the division state. So at the division time, it has already been duplicated. So every time whenever you would see a chromosome, it will look like X only. But that is two chromosomes, duplicated chromosome, the replica of one chromosome, right? Otherwise, when we say, it's simply one arm, centromere, and another arm, like that. The P and Q arms. It's because we were not knowing what exactly the chromosomes were containing. So we used to call them by its shape, the structure, and all. So centromere is one of the type by which we can say, is one of the bases on which we can say the
chromosomes can be of different types. If the centromere is exactly in the center, that is, the P and Q arms are of same size, same measurement, then we would call it as metacentric chromosomes. You know, the chromosome centromere is at the center. Meta means complete, completely centric, completely centrally placed centromere, so that the arms are of equal measurement. So now the second type would be like if it is slightly displaced towards one end. If it is slightly displaced towards one end, it would be called as submetacentric. And suppose it is displaced, the centromere is displaced from the center and it has near to the end of one of the arms, then we would call it as, acro. Hello? Am I audible? Yes, sir. Okay, okay. I thought somebody is speaking something. Okay. So when it is near to the end of the arm, then we would call it acromere. It's metacentric, submetacentric, and now it is acrocentric. That means the centromere is, it's not at the center, it is displaced from the center, but it is near to the end of one of the arms. So it's called acrocentric. Now another one is there, another one type of chromosome is being observed when the centromere is almost at the end of the arm. That means you will only one arm to it. So then किसी को मालूम है ऐसा एग्जांपल जो एकदम एंड पे हो, जिसके सेंट्रोमियर एकदम एंड पे हो, एंड ऑफ द आर्म पे हो? Okay, telocentric. Telomerase is an enzyme. Telocentric means that is the centromere is placed at the end. I'm asking whether you know any example of it, any type of chromosome which we know. No, it's Y chromosome. देखा होगा आपने Y chromosome को. Y chromosome telocentric है या acrocentric है? चलिए ढूंढिएगा आप लोग कि Y क्रोमोसोम जो है वो टेलोसेंट्रिक है या एक्रोसेंट्रिक है. एक्रोसेंट्रिक मतलब आप समझते हैं, जब सेंट्रोमियर सेंटर में ना होते हुए किसी एक तरफ है लेकिन वो ऑलमोस्ट एंड के नजदीक है, आर्म के एंड के नजदीक है, और थोड़ा सा सेंटर से डिस्प्लेस हो गया किसी एक तरफ, तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं. जब बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, एकदम एंड की तरफ चला गया, तो हम उसको एक्रोसेंट्रिक कहेंगे. और यदि वो एकदम एंड पे ही है आर्म के, यानी एक ही आर्म नजर आता है उसको, तो हम उसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक. ओके. एंड वाले पोर्शन को हम, जैसे हम सेंटर वाले पोर्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं, वैसे एंड के आर्म्स के एंड वाले पोर्शन को हम टीलोमियर्स कहते हैं. ठीक है. ये तो टाइप्स हो गए थे. अब देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया इन क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि उनके अंदर का कंटेंट किसी को मालूम ही नहीं था कि व्हाट दे हैव बीन मेड अप ऑफ. सो वो तकलीफ मतलब कि वो एक सुपरफिशियल नॉलेज ही था, एक सुपरफिशियल स्टडीज ही हुआ करती थी, जिसमें फिर उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, फिर जीन्स को प्लेस करना शुरू किया. फिर एक नई स्टडी शुरू हो गई, एक नया फील्ड स्टार्ट हो गया, विच इज कॉल्ड मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम के जो आर्म्स पे कौन से क्रोमोसोम्स के कौन से आर्म पे क्या एक चीज प्रेजेंट है जो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है. So they are starting putting their efforts in, and that's in that line of study कि ये portion क्या है. Then they have seen कि okay, this portion is responsible for some particular character or trait. So that trait means, if it is this trait or character, that means some kind of protein is being formed, but protein is being synthesized from that particular segment of chromosome. So now they have started using another term, the locus. Locus is the position of that particular fragment of chromosome which is responsible for some kind of trait, because they were not knowing exactly how it has been, carried out, or how it has been transferred to one generation to another generation. So they used to call them, okay, this particular character, this particular trait. Of course, maybe the black-eyed trait is there if the portion of the chromosome which is responsible for the black eye would be at this place on this chromosome
from centromere it is so much, so distant or so near to centromere, whatever it is. So that way they have started mapping it. The chromosome mapping started, and then they have seen, when the division comes, if it is, if it is a meiotic division, we end up seeing these chromosomes in a tetrad stage. यानी कि एक क्रोमोसोम दो में डिवाइड हो चुका है, दूसरा उसी का होमोलोगस पेयर जो है, होमोलोगस यूनिट जो है वो उसके साथ में रहेगा। तो हमें ऐसे चार चार क्रोमैटिड नजर आते हैं। ये क्रोमोसोम जो दो में बन चुका, और दूसरा एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि एक मदर से आऊंगा एक फादर से आऊंगा, तो वो टेट्राड स्टेज बनाते हैं, हम सिनैप्स भी बोलते हैं उनको। तो यदि एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं आफ्टर डुप्लीकेशन, हम उनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और एक जैसे दूसरा होमोलोगस पेयर है उसका, उसके भी दो क्रोमैटिड्स है, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। बट व्हेन दे आर इन द टेट्राड स्टेज, जब साथ में आ जाते हैं तो चारों के चारों, तब हम उनको बोलेंगे एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड, इनको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कितनी कितनी स्टडीज हो चुकी थी। उसके बाद लोगों ने बोला कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ ये एक प्रकार का इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट था कि बाय दिस द मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मिक्सिंग ऑफ the characters, the traits can occur, and improvisation in their expression can be achieved in further generations. तो ये इस प्रकार से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जो होता था क्रॉसिंग ओवर, और सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में बोलते थे कि लिंकेजेस हैं। यानी कि समटाइम्स इफ सपोज करिए एक क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये मेरा इंडेक्स फिंगर के साथ क्रॉस कर गया है कुछ, तो भी इसका पोर्शन यहाँ से यहाँ चला गया, उसका पोर्शन यहाँ से यहाँ एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं क्रॉसिंग ओवर में भी, पूरा का पूरा टुकड़ा टूट जाना, यहाँ पे लग जाना, और दूसरी जगह यहाँ से निकल के किसी और जगह चले जाना। तो ये जो होता है, इसके कारण कभी कभी क्या होता है, इस वाले मान लीजिए एक डॉटर सेल में चला गया, उसमें ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका था, तो इस उंगली का राइट हैंड का कुछ पोर्शन लेफ्ट हैंड में आ गया, लेफ्ट हैंड कुछ पोर्शन राइट हैंड में चला गया, तब ये मिक्स्ड, एक प्रकार से देखा जाए तो ये रिकम्बाइंड क्रोमोसोम हो गया, रिकम्बाइन हो चुका है किसी के साथ में। तो ये जो रिकम्बाइंड रिप्रेजेंटेशन है, ये कभी कभी क्या होता है कि ये जो रिकम्बाइंड पोर्शन था, उसके कारण में कभी कभी उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड में किसी किसी पोर्शन के, किसी किसी जीन्स का या किसी किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन में चेंजेस आते थे, जिनको हम लिंकेजेस में काउंट करते थे। यानी कि लिंकेजेस यूजुअली हैपन इन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड क्रॉसिंग ओवर जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ मैटर हो सकता है, या फिर समटाइम्स सिंपली द इन्फ्लुएंस आल्सो मेक्स देम इफेक्टिव। सो दैट वे क्रोमोसोम्स ऐसे। अब एक चीज और आपने सुनी होंगी, एक सुना है, न्यूक्लियस में ही एक चीज सुनी थी आपने कि न्यूक्लियोलस नाम की जगह है। तो वो क्रोमैटिन ही जब स्टेन करते थे तो एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर या सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नजर आता था, जो क्रोमैटिन के बीच में फंसा हुआ दिखता था। तो वो क्या चीज है? तो बाद में ये पता चला कि न्यूक्लियोलस जो है वो भी जेनेटिक मटेरियल का एक पोर्शन है, विच गोज ऑफ, जो दिखता नहीं है, कब? जब डिवाइड होते रहते हैं सेल, जब न्यूक्लियोलस नजर नहीं आता हमें। Nucleolus is again another darkly stained structure, circular or the globular structure between among the chromatin which is there in the nucleus. तो ये यूजुअली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन चीजों के लिए, उन प्रोटीन्स के लिए जो प्रोटीन्स हमें हेल्प करते हैं दूसरे नए प्रोटीन्स बनाने के लिए। दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के कैपेरेटस हैं, जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स हैं, वो राइबोसोम्स को भी किसी ने बनाने को ना, दे आर यूजुअली सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस। अब रही बात, अब देखा ये गया, कुछ चीजों में आपने देखा होगा कि जब हर बार, मैंने बताया कि नहीं बताया मुझे मालूम नहीं, आप लोग बताना कि मैंने ये बात बताई क्या आपको, कि जब भी एक डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल अब हम बोलने लगे, जब भी एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, यानी अपना ही एक पूरा रेप्लिका क्रिएट करता है, तो शुरुआत करने के लिए उसे एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा आरएनए बेस्ड टुकड़े की जरूरत पड़ती है
जो जब तक अटैच नहीं होगा तो रेप्लिकेशन शुरुआत नहीं होगी। तो वो जो प्राइमर जो कि आरएनए का टुकड़ा है, वो आरएनए और डीएनए जब तक जुड़ते नहीं है तो वो एक नया है ना, नया नया पॉलीमराइजेशन डीएनए का होता नहीं है। अब होता ये है कि जब एक बार पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल सॉरी रेप्लिकेट हो चुका है, तो ये जो लगा था प्राइमर जो लगा था वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो छोड़ देने सब सीधी सी बात आप समझिए कि डीएनए का जो ये ओरिजिनल था, यहाँ पे प्राइमर लगा, यहाँ से पूरा सिंथेसाइज हो गया, तो ये नया बन गया, दो स्ट्रैंड्स बन गए। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो आरएनए से जब वहां छोड़ के चला जाता है, जब प्राइमर छोड़ देता है, देन इट बिकम्स सिंगल डीआरएनए बन जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रह जाता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो यूजुअली अब बन जाता है स्टिकी। वो कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे पकड़ सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ाने के लिए तो यूजुअली पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ती है, बट दिस बिकम्स स्टिकी। ये किसी और डीएनए पोर्शन को जोड़ सकता है, उसको सेम कॉम्बिनेशन या सेम कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस मिले तो हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं इसको। तो ये स्टिकी एंड्स यूजुअली स्प्लाइसोसोम्स में भी होता है, जब आरएनए भी टूटता है तब भी स्टिकी एंड्स बनते हैं, जो स्प्लाइस करते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं। तो ये जो स्टिकी एंड्स जो बन गए आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन, उनको एक दूसरा एंजाइम है, अभी वो एंजाइम का नाम आ गया टेलोमरेज। टेलोमरेज नाम के, क्योंकि टेलोमर है, एंड है, तो एंड पोर्शन पे वो एंजाइम अटैच होता है यहाँ पे, और ये पूरा इसको फिर से रिसिंथेसाइज कर लेता है, उसमें सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी है। तो वो टेलोमरेज जो है, इट इज एन एंजाइम इन द न्यूक्लियस व्हिच हेल्प्स द टू मेक एंड्स जो अनपॉलीमराइज थे उनको। तो वो यूजुअली क्या कि उतना ही नहीं करता, वो एक्स्ट्रा पोर्शन सिंथेसाइज करता है, और डीएनए में हमेशा हर बार हर डिवीजन पे एक थोड़ा सा पोर्शन एक्स्ट्रा सिंथेसाइज हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। इतना ओरिजिनल साइज था, तो यहाँ से लेकर वो ऐसा एक्स्ट्रा सिंथेसाइज कर देगा, और यहाँ पे भी पॉलीमराइज हो जाएगा। इस प्रकार से हर डिवीजन पे एक टेलोमेरिक एंड जो है उसका एक रिपीट क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम सेनेसेंस मतलब एजिंग एजिंग के लिए यूज करते हैं, कि जितनी बार डीएनए रेप्लिकेट होगा उतनी बार वो रिपीट्स क्रिएट होते जाएंगे। तो इट बिकम्स अ वे टू अंडरस्टैंड और डिटेक्ट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। उस सेल को, उस डीएनए का एज पता लगाने के, सपोज हमारे इसमें से हमने निकाले, हमने वो रिपीट्स देखे, तो देखिए हम सिंगल सेल सिंगल जाइगोट से इस बड़े लेवल तक हम ग्रो किए, डेवलप किए, राइट। तो ये इतना सारा जो डेवलपमेंट हुआ, उतने कितनी बार डीएनए रेप्लिकेट हुआ होगा, राइट। तो हर रेप्लिकेशन में एक एक्स्ट्रा रिपीट आया होगा, टेलोमेरिक रिपीट आया होगा। तो ये वैसे काउंट कर, सपोज करिए कि हमारे एक आर्बिट्ररी सिचुएशन ले रहा हूँ कि सपोज हमारे केस में, हमारे डेवलपमेंट में जब तक हम एडल्ट नहीं हो जाते, तो सपोज करिए कि 1 लाख बार, मैंने कम लिया, 1 लाख बार डीएनए मल्टीप्लाई किया। तो 1 लाख बार डीएनए मल्टीप्लाई किया मतलब 1 लाख रिपीट्स आ गए होंगे, यानी एक जनरेशन में 1 लाख रिपीट्स आते हैं। अब मेरे बच्चे में फिर वो फिर से 1 लाख टाइम्स रिपीट होगा, तो यानी कि मेरे बच्चे में 2 लाख रिपीट्स रहेंगे, फिर ऐसे जाके आगे। तो ये ऐसे रिपीट्स को काउंट करके हम बोल सकते हैं कि कितने जनरेशन पास हो चुके होंगे। तो ये एजिंग के लिए एक अच्छा टूल है। और आ, बस हाँ, वही बात बताना था। तो अब एक एक और खास बात जानने की है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोअर एनिमल्स में you must have seen few animals, they keep themselves in a different phases of their development. वो अलग अलग फेज से डेवलप होते हैं। मैमल्स, सो हमारा जो डेवलपमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इंटरनल मेल्यू, मतलब ना मेल्यू में ही होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट में ही होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोअर एनिमल्स में, तो आपको नजर आएगा कि दे कीप देमसेल्व्स इन डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। जैसे कि आप किसी इंसेक्ट्स में आप देखेंगे, या फिर सिल्क फॉर्म देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं, तो वो एग स्टेज से फिर बाद में लार्वे निकलते हैं, लार्वल स्टेज में कुछ समय रहते हैं, वो कुछ समय लार्वल स्टेज में रहने के बाद वो प्यूपेट कर जाते हैं, एक ककून फॉर्म कर लेते हैं, एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई और द सिल्क मॉथ। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं मेटा
मॉर्फोसिस, मेटा मीन्स कंप्लीट, मॉर्फोसिस मतलब चेंज, शेप में चेंज लाना। क्योंकि एक कैटरपिलर और एक बटरफ्लाई, आप जानते हैं कितना डिफरेंस है दिखने में। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट मॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस। तो ये एक एक अलग अलग फेजेस में है, मतलब एग से निकले, लार्वल स्टेज में रहे, फिर प्यूपल स्टेज में गए, देन फिर बाद में वो एक एडल्ट फॉर्म में दे कम आउट ऑफ दैट प्यूपल कवर, दैट इज ककून, ककून से बाहर आते हैं। तो ये ऐसे वाले कंडीशन में क्या होता है कि व्हेन दे आर इन द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स, जब वो उस फेज में है जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कंप्लीटली, मतलब एक कैटरपिलर से एक एडल्ट बन रहे हैं। एक कैटरपिलर को 50, इतने जितने उसके सेक्शंस हैं उसके बॉडी पे, उतने उसके पैर दिखते थे, उसने उसके सीटे हुआ करते थे। अब लेकिन उसको हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ऐसे 3 बॉडी में डिस्टिंग्विश होना है, और फिर वो लिम्स उसके 4 या 6 जो भी रहेंगे वो रहेंगे, एंड देन उसके माउथ पार्ट्स चेंज होंगे, उनके माउथ पार्ट्स पे एंटेने आएंगे, उनके माउथ पार्ट्स पे माउथ पार्ट का टाइप चेंज हो सकता है, सकिंग हो सकता है, बाइटिंग हो सकता है, चूइंग हो सकता है, एंड उसके विंग्स आते हैं। क्योंकि यूजुअली इंसेक्ट्स में आप देखें कि मैक्सिमम इंसेक्ट जो है विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, विंगलेस इंसेक्ट्स भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर विंग्ड। तो ये जो टेरिगोट जिनको कहते हैं, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक लार्वा और एक एडल्ट में, आप देखेंगे तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं, बट दे गेट themselves transformed into adults in such a drastic way is called metamorphosis. And when this metamorphosis is being taken place, when it is being in under the process, it needs no disturbance at all, because it has to do a lot of work to transform it from caterpillar to an adult. It has to do a lot of work. तो वो जो ढेर सारा जो काम करना है, तो इट नीड्स एन आइसोलेशन। इसलिए वो प्यूपेट करते हैं, एक प्यूपा प्यूपा फॉर्म करके चारों तरफ वो एक कवर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ककून बना लेना, ककून कहते हैं जिसको। तो वो अपने आप को एक ऐसे आइसोलेशन में रख देता है ताकि कोई भी डिस्टर्बेंसेस या क्यूज या कोई भी फैक्टर्स उसको इफेक्ट ना करें इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अनडिस्टर्बिंग बनाने के लिए दे गेट इनटू ककून फॉर्म, दे प्यूपेट। सो लेकिन अब सीरियस सी बात है, इफ प्यूपेशन इज टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम लाइक फ्यू डेज और अ वीक और 2 व्हाटएवर, तो इतना जो समय ले रहा 10 उतने समय तक दे वोंट बी फीडिंग ऑन, राइट? वो खाएंगे नहीं। यदि वो खा नहीं रहे हैं तो फिर एनर्जी कहाँ से आएंगी? So that's why it's a kind of evolution. एग से लेकर वो प्यूपेशन तक में वो कैटरपिलर स्टेज में रहते हैं, where the caterpillar's main job is to feed, feed and feed. कुछ और नहीं करती है, सिर्फ खाती है। अब जब जब वो खाती जाएगी, लगातार खाती रहेगी, तो डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी निकालना, उसमें से प्रोटीन्स निकालना, वो सब भी तो निकाल के स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्यूपेट करना है और वहां पे उनको एनर्जी और वो रिसोर्सेज लगेंगे टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये क्या करते हैं, कैटरपिलर वाली स्टेज पे ढेर सारा खा के ढेर सारा रिसोर्सेज जमा करते हैं। एंड सीधी सी बात है, जब ढेर सारा खा रहे हैं तो आपको ढेर सारा एंजाइम भी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, राइट? तो ढेर सारा एंजाइम चाहिए, तो ढेर सारा एंजाइम कहाँ से लाएंगे? हर जीन के ऊपर, हर क्रोमोसोम पे एक जीन तो है। सपोज करिए कि उसे एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है एमाइलेज। सपोज इफ इट नीड्स एमाइलेज टू डाइजेस्ट द स्टार्च फ्रॉम द वेजिटेशन, यदि उसे वो वेजिटेशन से स्टार्च को डाइजेस्ट करना है और उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखना है, तो इट नीड्स अमाइलेज sufficiently with them so that they can digest the food which they are feeding on. तो ये खाने के लिए फिर अमाइलेज, अब सपोज करिए हर सेल में सिर्फ एक ही जीन है, यदि वो जीन एक बार ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट होके मान लो उसका प्रोटीन बनता है, अमाइलेज बन जाता है, तो एमाइलेज की क्वांटिटी कम ही होगी ना, हर सेल में एक ही तो सेटअप है, एक ही जीन है रिस्पॉन्सिबल। तो फिर इन ड्यू कोर्स उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, व्हाई नॉट वी मेक रिपीट्स ऑफ इट। यानी कि समझ में आई बात ना आपको,
एक साथ हमारे पास वो जो कोड है उसकी रिपीट्स हो मान लो बहुत सारे, और हम एक साथ उनको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट कर लें, तो जहां एक एमाइलेज मॉलिक्यूल बन रहा था 1 मिनट में, सपोज 1 मिनट में, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए उसके पास 1000 रिपीट्स हैं, तो 1000 एमाइलेज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 1 मिनट में. That way, the availability of that enzyme which is required to digest the food will be more, so they can feed on more food. लेकिन देखिएगा, आप देखेंगे कैटरपिलर की स्टेजेस होती हैं. व्हाई द स्टेजेस बीन डिस्क्रिमिनेटेड, या ऐसे कैटेगराइज क्यों किया गया स्टेजेस में? बिकॉज बिकॉज जब वो खाते हैं तो इतना खा लेते हैं कि वो खा खा के थक नहीं जाते. वो खा के अब वो जो खाया हुआ उसको डाइजेस्ट करना है, तो वो उतना ही सफिशिएंट एमाइलेज उनके पास हुआ करता है जितने को वो डाइजेस्ट कर पाते हैं. तो उतना तक वो खा लेते हैं, एंड दे रेस्ट, एंड दे कीप ऑन डाइजेस्टिंग द फूड विच दे हैव टेकन इन, लाइक टेकन इन. सो वो एक फिर बाद फिर से शुरू कर जाते हैं. तो वो जितनी एनर्जी की उनको जरूरत है प्यूपेशन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मान लीजिए 5 किलो चाहिए, तो मैंने पहली बार वो 1 किलो तक खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, आराम करेंगे, फिर दरअसल दूसरे किलो के लिए खाने जाएंगे. 1 किलो की जो बात मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है? तो दैट वे 5 टाइम्स वो अपने आप को फीड करेंगे, सो दैट वो 5 किलो का उनके पास रिसोर्सेज जमा हो जाए. तो इसके लिए जो 5 जो टाइप टाइम्स वो जो फीड करना शुरू करता है, बीच में रेस्ट लेता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेजेस, है ना? अब एक और चीज, हम कैटरपिलर को कैटरपिलर बोलते हैं, हम यूजुअली लार्वे बोल देते हैं कि भैया फला फला इंसेक्ट का लार्वा है, या फला बटरफ्लाई का लार्वा है, या फिर किसी सिल्क मॉथ का लार्वा है. बट आई टेल यू, हमें इसे लार्वा नहीं कहना चाहिए. और वैसे भी आप जब साइंटिफिकली पढ़ोगे तो इनको इंस्टार्स बोला जाता है. फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार. द नंबर ऑफ स्टेजेस, यदि 5 बार उसने किया है तो 5 इंस्टार स्टेजेस होते हैं. The install is nothing but the developing stage for getting ready to get transformed in metamorphosis. तो metamorphosis में अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए when they get ready by accumulating energy and the resources with them in different phase of time, तो उसको हम कहते हैं इंस्टार्स. तो किसी किसी में 5 इंस्टार्स होते हैं, किसी में 3 इंस्टार्स होते हैं, किसी में 4, किसी में 7. तो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिसोर्सेज दे रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स. जितने कॉम्प्लिकेटली वो ट्रांसफॉर्म होने वाले होंगे, उतनी ज्यादा रिसोर्सेज इनको जरूरत पड़ती है. तो अब इतने रिसोर्सेज को अब जो फीड कर रहे थे उनको डाइजेस्ट करने के लिए, अब उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई मल्टीपल कॉपीज हो उस जीन की जो वो एंजाइम बनाता है. दैट वुड बी वेरी गुड. तो दैट वे इन्होंने क्या किया था कि इन evolution those sequences or those portions of chromosome which are producing that particular enzyme, the protein enzyme, so if we have multiple copies of it, so आपने देखा होगा कि अब क्या किया है, किसी किसी एनिमल में उन्होंने उस पोर्शन को रिपीट्स में मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू किया. तो क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी. आप सपोज करिए आप ऐसे ऐसे हर एक लाइन खींच के रखे हैं, और एक लाइन को आप मल्टीपल कॉपीज उसी जगह पे रखते जाएंगे, तो क्या होगा, एक डार्क लाइन बन जाएगी. तो वो वही हुआ था क्रोमोसोम्स को. देखा गया कि वो क्रोमोसोम्स की साइज बढ़ गए, बिकॉज मल्टीपल कॉपीज होती गई तो क्रोमोसोम साइज बढ़ता चला गया. लेकिन वो एक ही जगह होनी चाहिए, एक ही लोकस पे होने चाहिए, ताकि वो बाद में सिंथेसाइज कर सकें उस एंजाइम को. तो एक ही लोकस पे जब वो इकट्ठे होने लगते हैं, तो वो लोकस पे या उस पॉइंट पे हमें डार्क कलर का ढेर सारा डीएनए या फिर कहना चाहिए न्यूक्लिक मटेरियल जमा हो जाता है एक ही जगह. तो वो डार्क कलर का स्टेन पकड़ता है. तो ये देखा ये गया है कि कुछ कुछ एनिमल्स ने अपने क्रोमोसोम को मल्टीपल रिपीट्स कर करके बहुत बड़ा बना लिया, और वो पोर्शन को उन्होंने रिपीट्स बनाए जिस पोर्शन से उन्हें उस पर्टिकुलर एंजाइम की, मैंने एक एंजाइम की बात की, ऐसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एंजाइम से अलग अलग प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है सिंथेसाइज करने के लिए. उस हिसाब से उन्होंने उनके रिपीट्स बना के रख लिए, वो बार बार रेप्लिकेट हो जाते हैं, उतना ही पोर्शन रेप्लिकेट हो जाता है. तो दैट वे वो फिर हमें जब माइक्रोस्कोप में नजर आया वो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम थोड़ा बड़ा दिखने लगा, बड़ा भी दिखने लगा, और वो पोर्शन जहां रिपीट्स थे उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जो सीक्वेंस था क्रोमोसोम पे, वो पोर्शन डार्कली स्टेंड होने लगा. तो हमें क्या है कि क्रोमोसोम के ऊपर बैंड्स नजर आने लगे, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट. तो हमने, और ऊपर से साइज में भी वो बड़े दिखते थे, इसलिए फिर हमने इनको बनाना शुरू किया जायंट क्रोमोसोम्स. फिर जायंट क्रोमोसोम्स में डार्क लाइट्स ऐसे स्टैंड्स पे नजर आते हैं, बैंड्स नजर आते हैं, जिसको हमने नाम दिया था पॉलीटीन क्रोमोसोम. ओके, वैसे ही
कुछ कुछ एनिमल्स में ऐसा इवॉल्व हुआ कि वो जो लंबा सा पोर्शन जीन क्रोमोसोम का पोर्शन है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम को कोड कर रहा हो, उसकी उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये उसके रिपीट्स बनाते जाते हैं। तो ये शायद मान लीजिए बड़ा सीक्वेंस है वो जीन का, तो वो एक ही जगह ऐसे बैंड जैसे एक्यूमुलेट ना होते हुए वो ऐसे पफ जैसे निकलते रहते हैं, कंटिन्यूस वो रिपीट्स बना के रख लेता है, तो पफ जैसे निकल आते हैं। तो क्रोमोसोम्स में ऐसे पफ्स दिखते हैं, तो पफ्ड क्रोमोसोम नजर आता है उसमें भी वो, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है जिसको वो रिपीट्स बना रहे हैं वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए वो बैंड्स ना बनाते हुए पफ्स बनाते हैं, बाहर निकल जाते हैं क्रोमोसोम से। इवन दे ग्रो बिग, वो भी काफी बड़े हो जाते हैं साइज में, क्योंकि बार बार रिपीट्स हो रहे हैं उनके, और वो पफ्स या लूप्स नजर आते हैं, ब्रश जैसे जिसको हम बोलते हैं लाम ब्रश। जब फर्स्ट टाइम देखा गया तो वो बोले कि वो लाम ब्रश क्रोमोसोम्स है, ब्रश सॉर्ट ऑफ दिखते हैं। आई डोंट नो क्या नाम से, किस नाम से लाम ब्रश कहा गया है। जहां तक मुझे लगता है कि वो जो लैम लैम जो होता है ना, जो वूल वूल देने वाला, तो उनके ऊपर जो इसको वूल को जब वो करते हैं, साफ करते हैं, या उनके कवर को जब साफ करते हैं, तो दे हैव गॉट स्पेशल टाइप ऑफ brushes to take out the ticks and insects and infections in those fur, या फिर उनके ऊपर स्किन के ऊपर का जो फर ही है कहना चाहिए, जो वूल में कन्वर्ट होता है बाद में। तो maybe it has got some similarity with that, so maybe it's called lamb brush, or there may be some other reason to call it. But like I've been told, I don't know how authentic it was, but I've been told it looks like brush, so it's called lamb brush chromosome. So इस प्रकार से दो टाइप के हमें ऐसे अलग अलग बड़े ग्रो किए हुए क्रोमोसोम्स दिखते हैं, जिनको हम जायंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दीज जायंट क्रोमोसोम्स आर टू डिफरेंट टाइप्स, polytene which has got bands in it, maybe in that the repeats are a bit less, and the portion of the repeat which is responsible for synthesizing that particular enzyme is small. That's why we have got bands. If it is bigger sequences or bigger portions of chromosome which are coding for the enzyme, then they have uh, loops coming out of the chromosome, and that's called brushy. So that gives a brushy appearance. So it's called lamb brush chromosome. So that way we have different types of giant chromosomes, basically, the lamb brush and the polygene chromosome. So you may go into details of it in on net also, in some books also. Like I'll be providing the uh, some literature, the study material too. So it's already 50 हो गया, 250 हो रहा है. So that way ऐसा है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बीच में. इसके बाद फिर थोड़ा सा हम आगे दूसरे ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ेंगे. बीच बीच में मैं आप लोग क्लिप्स डालता जाऊंगा, एंड एट द एंड ऑफ द जब पूरा खत्म हो जाएगा तो आई वुड बी लाइक पुटिंग ऑन द नोट्स आपके डाल दूंगा हर एक उसके लिए. एंड डोंट, मैं पहले ही कहा है कि मैं अपने उनके नोट्स डालूंगा, बाकी नोट्स चाहिए तो मैं आप लोग को अलग से दे दूंगा, बट डू नॉट टेल दैट आई हैव प्रोवाइडेड द नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज देयर विल बी लाइन, फिर यहाँ पे टसल हो जाती है कि आपने क्यों दिया, मेरा पोर्शन था. तो इट्स लाइक दैट. सो मैं अपने जो पोर्शन के नोट्स आप लोगों को डाल ही दूंगा, and rest we can see how that can be managed, or that can be distributed to you, or at the time of examination I may distribute those notes. So anyways, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ कहना है तो कह सकता है, जो आज सुने उसके बारे में भी, या फिर कुछ और चीज. मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, पता नहीं, आप लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो. यस सर, आ रही है. ओके. अच्छा, मैंने एक बीच में कहा था कि वो उनको लार्वा नहीं कहते हैं, इंस्टार्स कहते हैं, तो फिर लार्वा किनको कहते हैं? एनी आइडिया? कहाँ गया अमर, कहाँ गया? अमर नहीं है, अमर चला गया. कोई जानता नहीं है कि लार्वे किसे कहते हैं फिर? इंस्टार्स, इंस्टार्स तो मैंने बताया, इंसेक्ट्स की जो डेवलपिंग स्टेजेस है उसको हम इंस्टार्स कहते हैं.
get themselves ready for the metamorphosis. So larvae क्या है? Larvae भी developing stages है to get metamorphosis changes के लिए. लेकिन insects के moth या butterfly उनको इंस्टा लार्वे क्यों नहीं कहते? हाँ कि जनरलाइज टर्म में हम उनको लार्वा लार्वा कहते हैं, बटरफ्लाई का लार्वा होगा, बट यूजुअली वी शुड नॉट, एटलीस्ट कम से कम तो नहीं. these are larval stages. हेलो सर. क्लास लेफ्ट हुई क्या? नहीं, लेफ्ट हुई क्या? सर शायद चले गए. सर लेफ्ट हो गए? लेफ्ट होते क्या? आएंगे शायद सर. वेट करते हैं.
हुई क्या सर? शायद लेफ्ट हुई क्या? क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। ठीक है।